ने पाकिस्तान और भारत में भी ज़लज़ले की पेशगोई की है. A couple of fluctuations, and we see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean. That has been on the radar for several days now. And also to the west, the purple band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean. And we see... In the previous video, I showed the critical planetary and lunar geometry that we had from 4 to 5 February. And here's a brief update. As you can see, we had Mercury, Sun and Uranus in a conjunction. We also had the Sun, Venus and Jupiter in a conjunction. And on top of that, we had a full moon, which is marked here by the green line. And a convergence like this of planetary and lunar geometry combined can result in pretty large seismic activity. And what we had yesterday is just another example. Interestingly, this is the largest seismic event since August 2021, and that is above magnitude 7.6. This was a 7.8, and the last time we had a similar or larger seismic activity was in August 2021. And I'm going to show you quickly what happened at the time. As you can see, there was also a clustering of large earthquakes, and it followed on a huge clustering of planetary geometry at the time. And in the solar system, we see the red lines. I marked these red lines. These are planetary conjunctions, and that all occurred from 7 to 11 August in 2021. And there was also critical geometry with the moon, which is the green line. And that resulted in huge seismic activity in the South Sandwich Islands, 7.5, 8.1, and Haiti, 7.2, and also in the Philippines, magnitude 7, and even Alaska. And that all happened from the 11th to the 14th, following that critical planetary and lunar geometry from the 7th to the 10th. And of course, we issued a warning at the time as well. Going back to what happened yesterday, from the 4th to the 6th was critical, and we see this typical clustering of larger seismic activity that started on the 4th, and we're looking at magnitude 5.6 and larger here. And on the 4th there was a seismic increase 5.8, 5.9, and then on the 6th, right at the lunar peak that I mentioned in the previous update, we have the huge seismic activity, a full magnitude higher than I anticipated, because I expected up to high 6 magnitude. It was a bit larger than that, and it was absolutely devastating. And I tweeted about that region 3 days before it happened. That's more or less of a coincidence, although I did respond to a moderate seismic event, 4.4 magnitude in the region. And there was some increased seismic activity, but all moderate earthquakes. And that made me think about the region, because historically there have been very large earthquakes, very deadly earthquakes in the past, and it's been a long time. And that was the reason for me to tweet about that particular region, that sooner or later there will be around magnitude 7.5 again, and it just happened 3 days later, which I didn't know. But it is true that the planetary and lunar geometry were critical, including the full moon. So what we're going to have in the coming days, we see the SSGI graph for the coming week, and not much of critical planetary geometry, but we have a lunar peak on the 8th. There could be some seismic increase that will be tomorrow around that peak. How large exactly is difficult to say. It could be the higher 5 magnitude range, borderline 6 or over 6 magnitude, most likely. It is the second lunar peak following the critical planetary and geometry on 4-5 February. And then we see a higher lunar peak on the 10th. And that could be some seismic increase. Maybe nothing much is going to happen. With lunar peaks alone, that can be pretty tricky. We can have a significant seismic event in the 6 magnitude range. I'm not just talking about low 6, but it is a possibility. But around mix 6 or a little bit higher as well. Sometimes it happens with these higher lunar peaks like we have on the 10th. We're not there yet, so I will also cover that in the next update. And if you look further down the road, we see some critical planetary geometry coming up around half February, around the 13th, 14th, and that may become a little bit more critical, and I'll cover that in the next update as well. If you look at atmospheric fluctuations in the last couple of days, on the 2nd there was a fluctuation over Chile, and into the eastern part of the Caribbean. That could be significant for the region.
possibly around the lunar peak on the 8th, if it's on the 2nd, so if we count 6 days, that could still be significant. We also had a fluctuation on the 4th, actually, too. The first one is over the Gulf of Mexico down into the Pacific, and maybe there's going to be some seismic increase there. Could be to the south, Mexico, or just a little bit to the north. We had them before. Maybe nothing much is going to happen, but that's the fluctuation that we had. It's a rough estimate again. And then the other fluctuation, again, I'd say, we had it before, is over Alaska, western Alaska, down to New Zealand, also marking Tonga, the Kermadec region, which is seismically very active. These are the most significant fluctuations that we picked up in the last couple of days. Again, these are rough estimates. Not necessarily much may happen with those fluctuations, but they can be significant indicators. पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले के मुतल्लिक क्या जिक्र किया गया था, मगर ठीक 2 दिन पहले उसने अपनी पेशन गोई का रुख तुर्की की तरफ क्यों कर दिया, और वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ कि जो मुमालिक बताए वही हिल गए, जबकि बिल्कुल साथ इसराइल भी था। वहाँ क्यों इतना असर ना हुआ? उसकी ट्वीट में जिन मुमालिक का जिक्र था वो तमाम मुस्लिम मुमालिक थे, और जो नाम उसने लिए वही उतनी शिद्दत से हिल गए और तबाही फैल गई। यहाँ तक कि तुर्की में उसने साउथ सेंट्रल तुर्की लिखा बजाय कि सिर्फ तुर्की लिखता। उसने साउथ सेंट्रल तुर्की का ही लफ्ज लिखा, सबसे पहले लिखा। बाकी मुमालिक सीरिया, लेबनान और जॉर्डन के बताए, जहां तक शदीद झटके महसूस किए गए। मजीद हैरान कुन ये कि वो अपनी 4 दिन पहले यूट्यूब वीडियो में बता रहा था कि कोई 6.5 की शिद्दत का जल्जला आ सकता है, मगर अचानक 2 दिन पहले ही ट्वीट में उसने न सिर्फ अपने रीजन को बदल दिया, यानी कि मुमालिक को बदल दिया, बल्कि मैग्नीट्यूड जो कि पहले 6.5 बता रहा था उसको भी बढ़ाकर 7.5 लिखा, और वैसा ही हुआ। फ्रैंक हुगरबीट्स ने अपने YouTube चैनल की वीडियो में क्या बताया, आपको उर्दू ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प सियारों की ज्योमेट्री है। 31 को हमारे पास जो कमरी ज्योमेट्री है जो कि मरकरी पर नजर आ रही है, उसके साथ मजीद 2 कमरी अरूज पर नजर आ रही हैं, जो कि संगीन तौर पर साइंस नेगेटिविटी को बढ़ा सकती हैं। 4 फरवरी के करीब से इस तरह हमें बड़ी पचीदा सियाराती ज्योमेट्री नजर आ रही है जो कि वीनस के आस पास है। मजमूई तौर पर 4 या 5 को हमको सियाराती अरूज नजर आ रही है। मेरा अंदाजा है कि 4 से 6 फरवरी के दरमियान ज़ल्ज़ले के झटके और लहरें बढ़ सकती हैं, जो कि 6 मैग्नीट्यूड या इससे ज्यादा होंगी। लेकिन इस कमरी सियाराती ज्योमेट्री की वजह है जो कि 31 से 3 फरवरी तक होगी, तो 4 फरवरी को शदीद ज़ल्ज़ले की लहरें पैदा हो सकती हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकता या नहीं कह सकता कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन थोड़े चांसेस हैं। लेकिन इसको जहन में रखना होगा। अगर हम शमसी निजाम को देखें तो हमें पचीदा ज्योमेट्री नजर आ रही है, बुनियादी तौर पर 4 और 5 के आसपास, लिहाजा साइंस नेगेटिविटी में इजाफा होगा और 4 से 6 फरवरी के ज़ल्ज़ले के झटके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मौसमियाती लहरों का जायजा लें तो हमें 29 के करीब तब्दीलियां नजर आ रही हैं, जो कि एशियन रीजन की तरफ होंगी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका शामिल है, और साथ ही साथ इंडिया भी, जो कि दरमियान में है। दोबारा कहूँगा, ये अंदाजा है, पैदा होने वाले ज़ल्ज़ले माहौलियाती लहरों में ऐसे कोई भी निशान छोड़ कर नहीं जाते। ये थी वो गुफ्तगू जो फ्रैंक हुगरबीट्स ने अपने यूट्यूब चैनल की 4 दिन पहले की वीडियो में की, मगर इस वीडियो के 2 दिन बाद उसने ट्वीट किया और तुर्की साउथ सेंट्रल का रीजन बता दिया। फ्रैंक हुगरबीट्स ने अब मजीद बताया है कि तुर्की के अंदर, मैंने जैसे कि कहा था, आफ्टर शॉक्स आएंगे और अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तकरीबन 6 आ चुके हैं, और मैंने कहा था अब एक और आफ्टर शॉक जो 6 से ज्यादा का होगा वो आएगा, और वो भी आ चुका है। सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि वो बात कि कायनात का मालिक तो अल्लाह ताला की जात है, ज़ल्ज़ले सिर्फ वही जात ला सकती है। मगर दूसरी तरफ अगर कुरान पाक में नजर दौड़ाई जाए तो वहाँ पे लिखा है कि कायनात मैंने मुसख्खर करने के लिए इंसान को दी है, यानी कि कायनात के वजूद में जो कुछ भी है इंसान उसको सहर कर सकता है। अफसोस हम अपनी कमजोरियों की वजह से बैठे के बैठे रह गए, और वो आज टेक्नोलॉजी में इतने आगे